Welcome to Bookalooza. Today we have the pleasure of interviewing the remarkable author Sakar Upadhyay again, whose inspiring new book Unstoppable is creating waves on our platform. At just 19 years old, Sakar is not only a dedicated commerce student but also a visionary whose writing reflects a deep understanding of perseverance, personal growth, and the pursuit of dreams. Do check out his book available on our bookstore, and the link of the book is given in the description box below. So let's get started. So Sakar, it's your third book, and I'm really excited to interview you again. And your title seems to be very interesting. I mean, what do you want to say about it? The Unstoppable. Actually, ma'am, the book is all about Unstoppable because I want जितने बच्चे हैं ना actually they are kind of उनको कहीं रोका जाता है like wherever like in terms of if they want to accomplish their goals or like if they want to do something funny or like if they want to go somewhere. So unstoppable means that you need to be unstoppable. You just have to do what you want to do in your life, and at the same time, just go for it. Just don't think too much and just go for it. Just let it out, whatever it is in your mind. And I think that's the reason why I wrote the book because हर जगह बच्चे कोई ना कोई प्रॉब्लम में हैं ही कि कहीं ना कहीं रोका जाता है in terms of education or in terms of like college and everything. So the my motto was कि I think हर बच्चे को उतनी freedom मिलनी चाहिए जो अभी नहीं मिलती in terms of the education और हर चीज़ की घूमना फिरना वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. So that was the reason why I wrote the book. Okay, great idea. And you have also discussed the impact of others on our career and personal lives. And so, in the midst of all this, like, how can one stay focused and avoid being influenced negatively by others? Because these days negativity is all around us, and our environment shapes us. So Right. how can one stay focused? How can we get this idea from your book? Any ideas related to that? I think first of all we all need to stop talking to unknown people Okay. because they can be the reason why they can stop you from what you have to do in your life, and at the same time just revealing your dreams or like what you want to achieve in your dreams. You sometimes you just like reveal that to those people who you don't want to tell, like who Hmm. you don't know कि वो आगे जाके वो रिवील कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना एक वो कि आप जो आपको आगे जाके अपने फ्यूचर में करना है आप उसे मत बताओ. Right. अगर आप उसे खुद कर लेते हो तो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट अगर आप उसे पहले ही सबको बता दोगे तो देन इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स Hmm. ऑलरेडी रिवील्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो मे बी Right. ये है कि टू स्टे फोकस जस्ट डोंट टेल एनी वन अबाउट इट एंड जस्ट बी एज लो एज यू कैन पॉसिबल, क्योंकि जितना आप नॉर्मल रहोगे और किसी को नहीं बताओगे और सीक्रेटली उस चीज़ पे वर्क करोगे वो ज़्यादा वर्क करेगा. Right. So I think secrets, from this I can make out a definition of secret is something. Secrets are something which you tell everybody to tell nobody. So it is यस like that. यस. So it is It's like not a secret because हम लोग कितनों को बताते हैं, so it's not a right. secret. If we tell to the other person, that other person is also going to reveal it to some other person. So it's no longer a secret. Right. Okay. Cool. And also, making mistakes is a part of the learning process. So, can you share an example from your own life where a mistake led to a significant personal growth? Actually, I've done a lot of mistakes in my life. Like, how do I say? Like when I was in seventh standard, like I've done a lot of mistakes. At that, when I was in seventh standard, I recently joined in my new school, which was Doon Valley. So I made a lot of mistakes, like not speaking to a lot of teachers and just being ignorant, and they kind of didn't like my attitude. So I think mistakes we all made mistakes और हम सभी mistakes करते ही हैं. It is, I think, यूनिवर्सल है, हर कोई करेगा मिस्टेक्स तो. सो Right. आई थिंक मिस्टेक से सीखना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अगर वही सब चीज़ें आप करते रहोगे आगे जाके इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. Right. अगर वो आप स्टॉप कर दोगे तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू मेक यू इन अ पॉजिटिव साइड, बट अगर आप वही सब मिस्टेक्स करते रहोगे. आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हेन आई वाज इन 11th 12th, लाइक स्टडीज़ के बीच में. आई नो दैट
बट अगर मैं वही सब फिर से करता रहूँगा तो फ्यूचर इज़ नो लॉन्गर अ फ्यूचर. Right. So I have to make up for it and I have to be positive at a side where I want कि नहीं अब मुझे कम करनी पड़ेगी गलतियाँ because this is not how I am going to live. Hmm. Yes, so mistakes are something which you can learn from it, लेकिन ये नहीं कि you are repeating it again and again and just thinking कि oh it's all right अभी तो करा था मैंने गलती. It's not like that. If you are thinking about it then आपको करना पड़ेगा. आप बार बार mistakes नहीं कर सकते. Right. And I mean, in continuation of this, obviously, mistakes is an ongoing process. We keep on doing mistakes and we learn from them, and Right, significantly we learn from them. So, from right. your perspective, what is needed to enjoy life to the fullest? Obviously, mistakes is one thing, but what is another thing that we need to do to enjoy life to the fullest? I think whatever we are doing in our life, like every single process, like if we are working or if we are like doing our school work with our college work, whether you're just a housemaker, just do that with full dedication. Because अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप छुट्टियां मनाने जा रहे हो और वेकेशन, आप अच्छे से ही करोगे ना. ऑफ कोर्स स्कूल आप Hmm. जाओगे, होमवर्क पूरा करके ही जाओगे. यू वोंट लुक लाइक कि स्कूल है, आई वोंट कंप्लीट माई होमवर्क, लेट इट गो. It won't happen like that. अगर आप स्कूल जा रहे हो, of course you will complete all your homework. You have to look nice to all the teachers. And when you're on a vacation, आप full mind के साथ जाओगे कि okay अब वेकेशन है, मैं वो करूँगा जो मेरा मन है. So living your life to the fullest doesn't mean कि just breaking your boundaries. Hmm. Do everything under your boundaries. Like आप जो मज़े कर रहे हो, do that with all the restrictions की जो हैं कि आप जितना घूम सकते हो वो सब. लिविंग योर Right. लाइफ फुल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस वो कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है. Hmm. वो I करो think जिसमें जो be आप conscious ऑनगोइंग of काम है. others. Yeah, I think यस, be conscious of others also, about your environment also, about I mean your immediate relations also, and to your life. So there is a राइट. responsibility also which is added to you. यस. और कभी कभी तो ये सब चीज़ें भूलनी भी पड़ती हैं बिकॉज Right. बहुत सारे लोग आर गोइंग वेरी टफ इन द लाइफ कि उनकी लाइफ बहुत Right. ज़्यादा टफ है उनके हिसाब से. सो उनके लिए तो इट इज़ वेरी नीडी कि आप थोड़ा टाइम लो और थोड़ा जाओ कहीं पे एटलीस्ट अपना माइंड फ्रेश करो. गो ऑन अ वेकेशन बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट वेयर आप अपना माइंड अच्छे से चला सकते हो. और आप Right. थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में दिमाग नहीं चलाओगे तो वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो देन वेकेशन ही हो सकता है कि आप जाओ घूमने आराम से अपना माइंड फ्रेश करो. जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट कि कौन क्या कर रहा है क्या हो रहा है. लीव इट बिहाइंड एंड जस्ट हैव फन. Okay. यस. And so let's move on to another question, which is a little funnier. So, any superpower you wish to have for 1 minute only? सुपर पावर एक्चुअली गायब हो जाना. For 1 minute? Yes, because problems are everywhere and I just want to be like vanish like in just 1 minute. Like if I'm facing something, just vanish. The other person can't see me through. That where's this person? I just want to be vanish. That no, I'm not going to deal with this problem. Just let it be. Okay. Yes. And which Bollywood actor would you like to work with for a Netflix series? Uh, Not Karthik Aryan this time. Okay. because I've changed just now. I've changed it and maybe Pankaj Tripathi. Okay. Yeah, he is a gem. Yes. He is a Yes, maybe brilliant. Pankaj Tripathi. Yeah. Yeah. And if you could create one holiday, what would it be? And what name would you give to it? I was thinking this yesterday also because when I got the message on WhatsApp, I was just reading all the questions that what are the questions, and then I thought that okay, Liberty Day can be a day for all the students. Like on Okay. this day, like every student has liberty and he or she can do whatever they want in their life. They can roam here and there. There will be no homework. There will be nothing. You can come to school. You don't have to bring books. Just have fun in school. Just like walk and talk to your best friends and just जो 5-6 घंटे का स्कूल होता है उसमें आप मज़े करो. नो स्टडीज़. Okay. Yes, so Liberty Day is Liberty Day for all the students. वो डिपेंड करता है कि वो इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में है. To the world.
पूरे वर्ल्ड में है तो देन इट्स अ लिबर्टी डे, लिबर्टी फॉर एवरीवन. Yeah. Have you ever tried any funny thing in parties or wedding? Any prank? Yeah, like my cousins are the biggest prank makers actually. Okay. Like we go to unknown weddings. Like जब बुलाया नहीं जाता तो हम बिन बिन बुलाए चले जाते हैं. अच्छा. Yes, like we have done that a couple of, I think a lot of time we have done that, and also we have played I think hide and seek at night at 2 or 3 a.m. and making noises. Yes, I was at my Mossy's home and we did it, and we thought that okay, let's play hide and seek. We were around 6 to 7 cousins together, so we thought that okay, let's play. So we were so it was around 12 or 2 a.m. and we were playing it with full noises. Okay. Yes. मजा आता ना इन सब में. Yes, like right now तो चलो अब स्कूल खत्म हो गया, now it's college. बट आप जब आप पे टाइम होता है तो आप चलो कजन्स की, बिकॉज ऑल माई कजन्स नाउ आर इन कॉलेज और मे बी दे आर डूइंग द जॉब. माई सिस्टर शी जस्ट केम here to Dehradun now after like her 5 years of law. Okay. Yes, so she completed her 5 years of law in Bangalore and now she's came back to Dehradun for LLM. And now I have got some time to spend with her because she didn't got time to spend with us also Hmm. because she was away. So now we all meet together and we just have fun together because we have holidays now and 12 अगस्त से मेरा कॉलेज है, so जितना मजे में कर सकता हूँ उसे पहले ही कर लेता हूँ. Okay. Wow. Any message for our viewers? आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक मैसेज तो नहीं होगा, बट बस इतना होगा कि जस्ट डोंट बी टफ ऑन योर सेल्फ बिकॉज कुछ होगा नहीं ऐसा अगर आप टफ हो गए अपने ऊपर. जस्ट बी नॉर्मल एंड जस्ट आपका जो प्रोसेस है वर्क करने का उसी प्रोसेस में चलते रहो बिकॉज लाइफ इज़ सो हार्ड दीज डेज कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो रख लेते हो. IIT के बच्चे हो गए, चाहे IIM के बच्चे हो गए, नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, सेकेंडरी Right. स्टूडेंट्स हो गए. सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, just be normal and just focus कि. And I also that point know कि जहाँ पे parents are just what that word कि वो बस अपने बच्चों के ऊपर वो हो जाते हैं कि you have to bring this much of percentage or you have to bring 95 above. They have a lot of expectations from their children. Yes, you have Yes, to score this much. You have to score, which is not an enjoyable thing. It becomes a burden for them. it is a burden and also it is not right for them also because Correct. अगर आपके पेरेंट्स खुद ही इतनी परसेंटेज नहीं लेके आए so that you don't have a right to pace that thing on your children because it's their mind. Whatever they have to do in their future, it's depend on them. उनको जो Right. करना हो वो कर लेंगे. प्लीज जस्ट फोकस कि हाँ क्या आप अपने, बिकॉज ऑल्सो माई पेरेंट्स दे ऑल्सो डोंट टेल एनीथिंग टू मी. दे आर लाइक जस्ट पास हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट्स इट. So they are also not pressurizing me at any moment, not to me, not to my sister, or not to anyone. But अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो तो मत करो because that's not going to work. वो आप प्रेशराइज हो जाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे. अब 95% वो लेके भी आ जाएंगे but their mind is working somewhere else. कि मुझे परसेंटेज लानी है. एंड नाउ फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अब जो मेरे स्कूल में हैं उनको ये एक वो डर रहता है कि यार आई हैव टू बी 95, कोई और आगे नहीं आना चाहिए. Right. यू डोंट हैव टू गेट दैट फियर. नो, आप क्यों इतना वो हो रहे हो कि 95 से ऊपर किसी की आनी नहीं चाहिए. किसी की आ भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है. Obviously. 12th तक है, 12th के बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि किसकी क्या हुई है. That was मैं हूँ a आज. short time craze actually. यस, एंड ऑल्सो अब ये सिर्फ एक टाइम की वो चीज़ रहती है. लाइक ऐसे ओपनली मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते एंड ऑल्सो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है बिकॉज दे आर नॉट माई पेरेंट्स एंड आई एम नॉट देयर चाइल्ड. All right, and also I got 70% in my 12th, I got 70 in my 11th, I got 68 in my 10th. I'm happy with that. I'm really happy with that because मुझे नहीं बनना that 95 वाला बच्चा या 90% वाला बच्चा because बहुत सारे हैं ऐसे. Right. And being an average is also कि आप अपना ना mind थोड़ा सा कि थोड़ा सा creative side लगा सकते हो. You can do क्योंकि so आप- much of other stuff which is creative, Yeah. which is giving your soul a food which you want.
राइट, एंड आप पे इतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपको ये रहता है कि ओके मुझे तो बस पास होना है, इतनी परसेंटेज चाहिए, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं घूमूंगा फिरूंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक वो बच्चा है जिसके ऊपर इतना बर्डन है, वो मतलब सेम एज का बच्चा है लेकिन बर्डन उसके ऊपर 95% वाला है। राइट। तो उसको वो चीज़ रहेगी कि नहीं मुझे घूमना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ना एक एक क्या कहते हैं चीज़ तक ठीक है, बट ज़्यादा उसको वो करना मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती। कि हाँ ठीक है, जहाँ आपको लग रहा है नीड है वहाँ पढ़ो, कोई वो नहीं है। जहाँ पे प्रेशर है या जहाँ पे बच्चे हैं, मतलब जहाँ पे है बहुत सारा कि कॉम्पिटिशन, वहाँ ठीक है, बट स्कूल में तो ऐसा कोई होना नहीं चाहिए कि 5th क्लास के बच्चों को आप बोले जा रहे हो कि 95% लेके आओ। इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट ओके। So सो it's very inspiring message. And so let's wrap up the session today. And या thank you so श्योर, much, Sakar, for sharing your insights and experiences with us today. थैंक यू सो And मच मैम, थैंक यू सो मच। your book Unstoppable is truly a beacon of motivation and perseverance. And your answers have provided us with deeper understanding of the journey you have outlined. And we look forward to seeing more of your inspiring work in the future. श्योर And श्योर, to our viewers, stay tuned for more exciting star authors interviews at Bookalooza, and do check out Sakar's book available on our bookstore, and the link of the book is given in the description box below. Thank you, Sakar. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे मैम। You too.